सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं जगदीश यादव। आज हम नेक्स्ट टॉपिक ना पढ़ करके एक प्रॉब्लम को और सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस टॉपिक से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है दैट फाइंड द इनवर्स इफ एग्जिस्ट ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, so same as you know that is the question related to the Gauss-Jordan method or simply matrix method और simply a concept of matrix equivalence का concept पे questions है। ओके, सो चलिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे करना है। सो द सॉल्यूशन ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट दी कंसीडर दी आइडेंटिटी। सो आपका आइडेंटिटी का क्या थी आपकी याद कीजिए, प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी दैट द आइडेंटिटी इज सो कंसीडर the identity and that was A equivalents to I. Then when you apply the operations after operation it will be converted into the I, and equivalence to I it will be converted to the A inverse. Okay, so that was concept. So here that the matrix A is given, so let the matrix is given 2 5 3 1 2 3 1 0 8, and equivalence of this, because the order 3 by 3, that I will be 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Okay, so the target of this, first of all, what we do, the positional element at first row and first column का जो element है that must be 1. so इस 2 को मुझे 1 बनाना है। so उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 2 को मुझे इस 2 एलिमेंट को मुझे क्या बनाना है, 1 बनाना है। so उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इंटरचेंज करूँगा। so R1 रो R1 will be interchange with R2. okay, so R1 and R2 will be interchange. so when you apply this operation, the value will be 1 2 3 2 5 3 1 0 8. okay, and equivalence to this it will be 0 1 0 1 0 0 and 0 0 1. okay, then what we have to do, we have to make the zeros here. okay, so what we do, we have to make zeros. so where we have to make zeros, so we have to make zeros in place of 2 and in place of 1. so for that we apply some, develop some property. so property will be that R2 implies, what implies, that R2 minus 2 times of R1, and next property will be that R3 implies R3 minus of R1. so यहाँ R1 की मदद से R2 और R3 के एलिमेंट्स को मैं 0 बनाऊंगा। so the value will be, when we apply the above property, so R2 and R3 के जो एलिमेंट है वो चेंज होंगे, R1 का एलिमेंट चेंज नहीं होगा। so copy it, so 1 2 3, okay, and equivalence to this it will be 0 1 0. since R2 और R3 के एलिमेंट चेंज होंगे, so क्या चेंज होंगे, so it will be 0 and that will be
when you multiply with 2, so that will be 4, and 5 में से 4 को minus करेंगे, so it will be 1. Okay, and that will be 6. When you apply 3 minus 6, that will be minus of 3. Okay, when you minus from R3, it gives the 0, it will give minus 2, it will give you the 5. Okay, so it will give you the 5. Okay, moreover, in this side, it will be when you minus R2 minus 2 times of this, so again it will be 1, it will be minus of 2, it will be 0, it will be 0, it will be minus of 1, and it will be 1. Okay, now the next target is that the positional element of second row and second column, that must be 1, and with the help of this one, the above and below element must be 0. So what we apply the property? So we apply the next property, that R3 implies to that R1 implies to R3 plus 2 times of R2. Okay, and as well as we can apply that R1 implies to, so that will be that R1 minus 2 times of R2. Okay, so when we apply this property, so the matrix will be 1 0 9 0 1 minus 3, and it will be 0 0 minus of 1. Okay, equivalence to this, in this side it will be minus 2 5 0 1 minus 2 0, that will be 2 minus of 5, and it will be 1. Okay, now in the place of this corner element, that third row and third column element, that must be 1, but here it is a minus 1, so we will multiply R3 with minus R3. Okay, so when we do this, so the element will be 1 0 9 0 1 minus 3 0 0 1, and equivalence to this, that will be minus 2 5 0 1 minus 2 0, and that will be when you multiply minus sign to it, so it will be minus 2, it will be plus 5, and it will be minus 1. Okay, so now the next target, that the positional element of third row third column, the above element must be 0. So for it, the property will be R2, so R2 3 times of R3. Okay, and for R1, so R1, that will be R1 minus 9 times of R3. Okay, so it will become the identical matrix, so 1 0 0
0 1 0 0 0, that will be 1, and equivalence to this in this side it will be when you multiply with this one 9 times, so minus 18 minus, then it will be 16. Okay, so it will be 16, then after it will be minus 40, it will be 9, it will be minus 5, it will be 13, it will be minus 3, minus 2, 5, minus 1. So this is the final equivalence of I. So as you know that again it became the I. So as you know that this matrix is I, so the equivalence of I as per the statement, it will be the A inverse. So hence, so we can say hence A inverse is equal to 16 minus 40, 9 minus 5, 13 minus 3 minus 2, 5 and minus 1. That will be the answer of the given matrix. So उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको इन्वर्स कैसे निकालना है ये समझ में आ गया होगा कि किसी मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स का हम ए इन्वर्स थ्रू मैट्रिक्स मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड के थ्रू कैसे यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं। ओके, सो अगर वीडियो समझ में नहीं आई तो आप इसे पॉज करें, 1 से 2 बार देखें, फिर भी अगर कोई डाउट्स या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, और मैं उसका जवाब जरूर दूंगा आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।